हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आरआरबी टेक्नीशियन 2026 की जो रिक्रूटमेंट है ग्रेड 3 उसके लिए जनरल साइंस की जो है हम एक सीरीज स्टार्ट करें। ठीक है, सीरीज स्टार्ट करने पहले जो है अपन एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है 2026 का जो ग्रेड 3 का है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न जो है वो चार स्टेप्स में मतलब चार सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो सबसे हाईएस्ट वेटेस्ट सेक्शन है वो है जनरल साइंस का, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 40 और उसके लिए मार्क्स दिए हैं 40। देन सेकंड सेक्शन जो आएगा वो है मैथमेटिक्स का, जिसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए है 25 और मार्क्स भी उसके दिए हैं 25। देन थर्ड जो है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सेक्शन है, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 25, मार्क्स इसके है 25। एंड लास्ट फोर्थ वन इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के जो रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 और मार्क्स भी इसके दिए हैं 10। तो ऐसी टोटल अगर देखते हैं तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और मार्क्स भी यहाँ पे है 100। तो चार सेक्शन जो है वो ग्रेड 3 एग्जाम के लिए है। तो आज जो हमारा कंसेप्ट है वो है जनरल साइंस की जो सीरीज अपन एमसीक्यूज की स्टार्ट करें, उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख लिया। अभी अपने पास क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि विदाउट स्टडी मटेरियल अपन प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो स्टडी मटेरियल जो है अपने पास क्या अवेलेबल है वो देख लेते हैं। तो देखिए जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज प्लस पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें एमसीक्यूज प्लस करंट अफेयर्स वन लाइनर दिए है। टोटल 2000 प्लस एमसीक्यूज इसमें कवर हो। ठीक है, सेकंड जो है वो जनरल साइंस का है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तीन मॉड्यूल्स कवर किए, 90 यूनिट्स एंड 4500 प्लस एमसीक्यूज इसमें कवर किए। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एग्जाम के लिए। देन रीजनिंग एप्टीट्यूड का है, जिसमें 35 चैप्टर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस दिए हैं और एवरी टॉपिक मतलब एवरी सब्जेक्ट के मिनिमम 50 टॉपिक्स जो है वो प्रैक्टिस सेट्स में कवर किए। देन उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पीडीएफ है, जिसमें 25 चैप्टर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और एवरी सब्जेक्ट का मतलब एवरी चैप्टर का जो है वो यहाँ पे 50 एमसीक्यूज जो है वो कवर किए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। इंपॉर्टेंट पीडीएफ एग्जाम के लिए। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे डायरेक्टली दिया है, व्हाट्सअप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कंसेप्ट है टॉपिक वन, मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब फिजिक्स का कंसेप्ट है ये। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट है मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके एमसीक्यूज कवर करेंगे और ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपके लाइक्स बढ़ते हैं तो ही अपन ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट है, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 18 न्यूटन ईस्ट एंड 12 न्यूटन वेस्ट act simultaneously on it. After 5 सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज। तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखते हैं तो नेट फोर्स अगर देखते हैं तो नेट फोर्स कितना आएगा 18 न्यूटन माइनस 12 न्यूटन मतलब 6। एंड ईस्ट एक्सलरेशन अगर देखते हैं तो 6/4 आएगा, मीन्स 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालते हैं तो हाफ इंटू 1.5 इंटू 5 सेकंड है तो 5 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अगर एग्जैक्ट देखते हैं तो 18.75 मीटर ईस्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, a body moving with constant velocity enter a region where the net external force suddenly became zero after previously experiencing acceleration. It will now. तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट कंटिन्यू एक्सेलरेटिंग, सेकंड ग्रेजुअली स्टॉप, थर्ड कंटिन्यू विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फोर्थ रिवर्स डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, कंटिन्यू विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ zero net force means zero acceleration, so the body continue with the same velocity. Next third, a man of mass 70 kg stand inside a lift accelerating downward for 3 meter per second square. ठीक है, the apparent weight become, अब 3 मीटर apparent weight अगर निकालना है तो m of g minus a मतलब 70 in bracket 10 minus 3 मीन्स 70 इंटू 7 मीन्स इनडायरेक्टली 490 न्यूटन। तो 490 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट फोर्थ, टू आइडेंटिकल ब्लॉक आर कनेक्टेड बाय द लाइन स्ट्रिंग ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली।
one block is suddenly made heavier by placing an extra mass on it. Which quantity remains equal for both blocks throughout the motion? So the question is first velocity, acceleration, momentum and kinetic energy. The correct answer is second acceleration, because since the string is inextensible, both blocks always have the same magnitude of acceleration. Next, fifth, a truck moving with uniform velocity suddenly double its mass while the engine continuously producing the same driving force and resistive force remains negligible. The acceleration immediately after doubling the mass became. So the option is first double, four times, zero and half. So correct answer is first half, because acceleration is inversely proportional to mass for the constant force. Next, sixth, a force of 24 Newton, ठीक है, act a body producing the acceleration of 8 meter per second square. Another force of 60 Newton act on the same body. The new acceleration है, तो mass means indirectly क्या होगा यहाँ पे, newtons divided by acceleration. तो 24 divided by 8 means 3 kg. So acceleration कितना आएगा, 60 divided by 3 means 20 meter per second square. तो second जो है correct answer है. Next, 7. A passenger sitting inside a bus moving along a circular road field push outward because. So the question is first, his body tends to maintain straight line motion due to inertia. Second, centrifugal force act as an inertial frame. Third, gravity changes direction. And fourth, burst speed decrease. So correct answer आएगा first. His body tends to maintain straight line motion due to inertia, because the outward sensation is due to inertia resisting the change in direction. Next, 8. A force act on a body for 4 seconds, changing its momentum for 10 kg per meter square meter second to 24 kg per meter second. The average force is, तो force मतलब change in moment divided by time. ओके, तो यहाँ पे 34 माइनस 10 डिवाइड बाय 4 मीन्स यहाँ पे आएगा 24 डिवाइड बाय 4 मतलब 6 न्यूटन. तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड 6 न्यूटन. Next, ninth, a body is moving north with constant velocity. Another force act exactly toward the east. Which statement is correct immediate after the force start acting? So the option is first, speed remain constant forever. Second, direction begins changing immediately. Third, velocity remain northward. And fourth, motion stop instantly. So correct answer आएगा second, direction begins changing immediately, because the eastward force produce eastward acceleration, changing the direction of velocity immediately. Next, 10. A person push a wall with force of 200 Newton. The wall does not move. Which statement is correct? So the question is first, the wall exert no force. Second, the wall exert 100 Newton backward. Third, the wall exert 200 Newton in the opposite direction. And fourth, the wall exert more than 200 Newton. The correct answer is third. The wall exert 200 Newton in the opposite direction, because according to the Newton's third law, action and reaction are equal and opposite. Next, 11. A 5 kg object moving at 8 meter per second collides elastically with the stationary object. If it comes to the rest after collision, the other object must have. So the option is first, mass of 2.5 kg, mass 5 kg, mass 10 kg and mass 15 kg. So correct answer आएगा second, mass 5 kg, because in a perfectly elastic head-on collision, identical mass changes velocities. Next, 12th, a body is projected vertically upward at the highest point of its motion. So the question is first, velocity and acceleration are both zero. Second, velocity and acceleration are both upward. Third, velocity is upward and acceleration is zero. And fourth, velocity is zero but acceleration is downward. So correct answer आएगा fourth. Velocity is zero but acceleration is downward, because only velocity becomes zero and gravitational acceleration remains downward. Next, 13. A force produce acceleration in a body
the same force act on another body having 3 times the mass, the acceleration become. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 3a, a by 3, a and 9a, तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड a of 3, ठीक है, बिकॉज since acceleration is inversely proportional to mass, then tripling mass reduce acceleration to the 1/3, means 1/3. Next 14, a body experience balance force while moving the straight road. Which quantity must remain constant? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, तो करेक्ट आंसर है थर्ड वेलोसिटी. बैलेंस फोर्स implies zero net force and zero acceleration, so therefore velocity remain constant. Next 15, a rocket move upward in space after leaving earth atmosphere mainly because. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एयर पुश इट अपवर्ड, second gravity disappear completely, third high speed gases expelled backward produce an equal and opposite reaction force, and fourth vacuum provide additional thrust. तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, high speed gases expel backward produce an equal and opposite reaction force, because rocket propulsion is based on Newton's third law of motion. Okay, the backward expulsion of gases produce an equal and opposite forward thrust. वैसे देखिए जनरल नॉलेज की पीडीएफ अवेलेबल है, जनरल साइंस पीडीएफ अवेलेबल है, रीजनिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, सभी सेक्शंस पीडीएफ अवेलेबल है. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर डायरेक्टली दिया है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.